last few weeks, we've seen cow vigilantes out in the streets enforcing their law. A law not necessarily which is in keeping with the Indian constitution, but the law that they believe in. Well, just how much we care for the cow becomes apparent when you will see this ground report filed by my colleague Sharat Kumar from Jaipur. He went to a cow shelter not very far from the capital city, just about 40 kilometers away. This is Rajasthan's biggest cow shelter. It's supposed to be one of the biggest cow shelters in this country. He jumped over the fence to get in because the gates were locked, and when he got inside, what he saw was beyond shocking. Hundreds of cows lying dead, others on the verge of dying. Why? Because since the 21st of July, none of these cows have been fed. There's some kind of a strike going on. The workers are disputing the money that's been paid to them. So everyone seems to have forgotten about the holy cow. India's mother has been abandoned. This is a hard-hitting India Today exclusive report. 25 kilometers from Jaipur, this is Rajasthan's biggest government cow shelter. This is where the holy cow is brought to be nurtured, fed and revered. But instead, the cows languish here in mulch, starving, abandoned and dead. As far as the eye can see, there's no trace of a cow protector or a caretaker. What you will see are dead cows everywhere. Dead cows between healthy ones, forgotten and discarded. Dead cows in open fields covered with stagnant rainwater and muck. Dead cows that have now become food for scavengers. Dead cows piled up on a cart with a stray crow feeding off them. In Rajasthan, the first and only state to have a government department specifically for cows, including a cow minister, this is the shocking reality of cowsheds. When India Today asked the chairman of the Gaushala why so many cows at the shelter were dying, he blamed it on the monsoon and even admitted that close to 20 cows die here every single day. ये गायें तो शहर की बीमार गायें यहाँ आती हैं और दूसरा कारण ये हो रहा है कि अभी दलदल के कारण से बारिश ज़्यादा हो रही है, बाड़ों का निकास प्रॉपर नहीं था, इस कारण से कुछ रेसों के अंदर गायें ज़्यादा मरी हैं. He then proudly declared that the Rajasthan government was not responsible for the pathetic state of cows in this government-run Gaushala. उपायुक्त के पास गौशाला की पूरी जिम्मेदारी होती है. उपायुक्त की पूरी और जो प्रभारी होता है इन दोनों की जिम्मेदारी होती है. वो अपने समय के ऊपर निर्वहन नहीं किया जिम्मेदारी का, इस कारण से गायों की मौत. किस पार्टी? There are close to 8,000 cows at the Higonia Gaushala and close to 200 caretakers who are responsible for feeding them. But for the last 5 months, the workers here have not been paid, and for the last couple of weeks, they've been on strike. In their absence, no one has bothered to separate the dead, rotting cows from the healthy ones. No one has bothered to even feed them. 5-6 महीना का पीछे दिया. 5-6 महीने से पैसे नहीं मिला आप लोग? हाँ, 1 महीना का 5-6 महीना का और ये दूसरा महीना का. तो अब लेबर आ नहीं रहे और पैसे दे नहीं और ये पैसा मांगे थे और थाना बलार गांड कुटाव लोग आए गल्ला गांड कूटती. ये सब लेबर की पेमेंट की टाइम टू टाइम समस्या है, टाइम से पेमेंट नहीं होता है. अब पिछले किस तारीख से हड़ताल चल रही है जो अभी परसों ही टूटी है साहब. तो व्यवस्था तो साहब यदि गोबर उड़ जाता तो कीचड़ नहीं होता. Even the administrators in charge come up with lame excuses for why mother cow has been so deeply neglected. अब ये मौसम की कारण से लगातार बारिश के कारण से ये जो ड्रेनेज नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से पानी, इसके कारण से और यहाँ पे जो मजदूरों की कमी है,
हमारे पास में मजदूरों की कमी है, उसके कारण से ये पूरा जो मामला हुआ है ये इस वजह से हुआ है। नहीं तो मैं तो अभी जस्ट आज तो अभी देखा आया ही हूँ ना, तो अभी देख ही रहा हूँ, तो अभी ICU वार्ड में मैं देख ही रहा हूँ, कोई इसमें पानी वगैरह तो इधर तो नहीं है। मैं गौ माता को समस्त प्राणियों का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करती हूँ। In May last year, Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje and her ministers vowed to protect the cow. The government even introduced chapters on the cow in school textbooks. But all that promise and political posturing seems to have been only in name. With Sharad Kumar in Jaipur, Bureau Report, India Today. Shocking, totally shocking. The deaths taking place one after another. More than 500 cows dead in the last 1 week alone. These cows haven't been fed since the 21st of July. This particular cow shelter, the Hingonia Cow Rehabilitation Shelter, has about 9,000 cattle. It has a budget of 20 crore rupees. So this is not some run-down, ramshackle cow shelter. It's supposed to be the pride and prestige of cow preservation in Rajasthan. Joining me now to talk about this India Today reality check, Sadhvi Jayabharti. She's with the Divya Jyoti Jagrati Sansthan. She works very closely on cow protection. They run several shelters in and around the national capital. With us also at this time is Ramcharan Bohra. He's a BJP MP, the representative from Jaipur. I want to go across first to Ramcharan Bohra because हमने अभी इन तस्वीरों में देखा सांसद साहब की किस तरीके से जयपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर दर्जनों गाय मरी पड़ी हैं। 21 जुलाई से उनको खाना नहीं खिलाया गया। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गौ रक्षक हैं, गाय हमारी माता है। देखिए तो सही किस तरीके से ट्रीट करते हैं हम लोग अपनी माता को। आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे खेद है कि गायों का अभी मरने का मुझे समाचार मिला और मैंने टीवी पे भी देखा, अखबार के माध्यम से भी जानकारी मिली और मैंने जो गौशाला का हमारे अध्यक्ष हैं भगवत सिंह देव उनसे भी बात की। बताया गया कि वहाँ पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और काफ़ी दलदल हो रहा है और दलदल में जो गायें फंस जाती हैं और जो गायें वहाँ गौशाला में हैं, जयपुर शहर में जो आवारा पशु के रूप में जो पाई जाती हैं, उनको बीमार गायें हैं, विकलांग गायें हैं, जो एक्सीडेंट हो जाता है, वो ऐसी गायों को नहीं सर, आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। जब हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट जब यहाँ पे गया, एक सेकंड मैं आपको बता दूं कि हकीकत क्या है। जब शरद कुमार दीवार टाप कर पीछे से इस गौशाला में घुसा, उस वक्त वहां पर एक शख्स नहीं था। वहां पे पेमेंट को लेकर डिस्प्यूट कोई चल रही थी। वर्कर्स कह रहे थे कि हमें पेमेंट नहीं हुई। सब गायों को गांव रक्षक प्रोटेक्शन के लिए है ना, सारे गायों को छोड़ के, गायों की हालत तो देखिए, उनको छोड़ के काउ शेल्टर में भागे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं और वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गाय हमारी माता है। किस तरह की माता है? किस तरह का ख्याल रखते हैं आप अपनी गाय का? ये तो आपके राज में हो रहा है ना सर। देखिए, ये बात आपका कहना बिल्कुल आपका कहना सही है कि कुछ दिनों पूर्व वहाँ पर लेबर स्ट्राइक करके बैठी हुई थी और लेबर अब काम करने भी लग गई है। बाकी ये सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो गायें आवारा पशु के रूप में पाई जाती है, उन गायों को लाकर और हिंगोनिया गौशाला में रखा जाता है, जो बीमार गायें होती है। सर 21 जुलाई से बार आप ये मत बोलिए कि वहाँ पे बीमार गाय रहती है। 21 जुलाई से अगर आप गाय को खाना नहीं खिलाएंगे, 21 जुलाई से अगर आप गाय को खाना नहीं खिलाएंगे तो मरेगी नहीं तो क्या होगा? 21 जुलाई से गाय को खाना नहीं खिलाया गया है, वो लगातार मरती चली जा रही है। उसका ख्याल रखने के लिए वहां पे कोई नहीं। अगर पेमेंट को लेकर डिस्प्यूट चल रही है तो उसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने मेयर से भी बात की है, वहाँ पर जो गौशाला का चेयरमैन उनसे भी बात की है, अधिकारियों से भी बात की है और मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि गायों का मरना हो रहा है रेगुलर। आज भी 50 गायों के मरने की बात सामने आई है। मैंने बात की अधिकारियों से भी और चारा प्रॉपर मिल रहा है, लेबर काम कर रही है। बाकी जो गायें बीमार गायें हैं, Minister of Parliament, this whole business that you are now trying to tell our viewers that the workers are back at work,
the workers are back at work because the India Today group put this story out in the public domain. That's when people rushed in. That's when the senior engineers started going in. Before that, there wasn't a soul tending to these cows. I want to go across now to Sachin Pilot. He heads the Congress in Rajasthan. He's joining us on this broadcast. He's watching our investigation. What do you make of the responses coming in? You know, what we are hearing is a total evasion of responsibility. The BJP making it seem as if these are all old, aged cows, which is why they're dying. It's got nothing to do with the fact that there's no one tending to them. Sachin Pilot. Well, Rahul, I'm not at all surprised because, you see, the elections in Rajasthan are not due for another 2.5 years. And we have now very well discovered that this whole love for the cow that the BJP and its affiliates profess, the whole controversy in the country about cow vigilante groups, these goons and thugs who have taken over the mind space in India today, are all these people who are basically double-faced and hypocritical. Here, not only in Hingonia, there are about half a dozen places in Rajasthan where tens of thousands of cows are dead and dying. People like common people, NGO, people from our party have gone and rescued these cows, but the Ministry of the Cow Protection in Rajasthan, the only state which has a cow protection ministry, does not have a budget or an office. So all these false fears about Gau Raksha, Gau Bhakt, Gau Mata, beef politics is all for getting votes. When there are no elections, there is no love for the cow. It's only when elections come that they do Gau Puja, they put a tika on the cow's forehead and seek votes in the name of the cow. But we've seen the reality of how much not only disconcern, but apathy. It is absolutely inhuman and cruel to let any animal, let alone the cow, die this way, especially when your vote bank is the flank of the cow. It's absolutely unacceptable. The BJP, not only in Rajasthan, but in all over the central leadership, must apologize for the double-faced politics that they do behind Hindutva and this cow politics. The Congress there demanding an apology from the BJP. I want to introduce also Ambika Shukla, one of India's foremost animal rights activists. But before her, I want to bring in Sadhvi Jayabharti. As somebody who actually works on cow preservation, what do you make of what we are seeing in one of India's biggest cow shelters? People just leaving the cows there to die. From the 21st of July, these cows hadn't been fed. The visuals that I've seen are utterly shocking, and you know, I don't think they can be justified at all, because if you see that, you know, there's because of the monsoon, so it's not the first monsoon we've received this year. Probably, you know, there would have been monsoon in previous years, what the preparations were, and if, you know, the strikes are for months over, and have there been any replacement, and there could be no justification to the pathetic state of cows in this particular cow shed that you've shown to us. Now, one of the things the BJP MP says, and since you actually work in this field, I want you to explain that to our viewers. He says that most of the cows that come to the Hingonia Cow Rehabilitation Center are aged cows. My logic to him is, if you don't feed them from the 21st of July, it's going to be 2 weeks since, they will die in any case. But does this logic hold any merit? But then you just mentioned a budget here. 20 crore rupees? Right. So what was it used for? Not taking care of the diseased and the aged cows? So if we are using that budget, where is it going and where is the effect? Where is it being? It's not utilized anywhere. I cannot see it anywhere. The thing is that, you know, it's utter carelessness. It's been taken for granted. And I think... And it's a hypocrisy. Right. Utter sheer hypocrisy to have these cow vigilantes out on the road trying to enforce the law, whereas people who are actually supposed to be cow protectors, they are not functioning, they are not doing what they're supposed to, cows being left out to die. Ambika Shukla, what do you make of our investigation tonight? Rahul, I haven't seen the visuals, but the facts that you are speaking of are truly saddening. But it is true that state welfare organizations, any state-run welfare organizations, be them orphanages, be them widows' homes, be them any state welfare-run organizations, unless these are labors of love, these are really not well-run. We have orphanages that are in just as pitiable a state. So I think we just need to reprioritize our institutions and say that the weakest need our strongest protection, be it children, be it women, be it animals. We need to understand. I think what's at play, I'm sorry, it's not just about reprioritization. What's at play here is far more sinister.
This is complete abject dereliction of duty. We've got Sachin Pilot with us, Ramcharan Bohra. वो मांग कर रहे हैं कि बीजेपी को, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए. आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं काउ प्रोटेक्शन की. आपकी हकीकत आज देश की नजरों के सामने में एक्सपोज हो गई है कि आपकी सरकार वाकई में कितना केयर करती है काउस के बारे में. इसकी तस्वीर पूरे देश ने आज देखी है. माफी मांगने को तैयार हैं कि नहीं रामचरण बोहरा साहब? देखिए, जो गाय, इसमें माफी मांगने का सवाल नहीं होता. ये जो दुख है कि गायें जो मर रही है वो गायें दलदल में फंसने होने के कारण, और ऐसा है सर अभी आपने साध्वी जय भारती की बात सुनी. आप बार बार कह रहे हैं कि दलदल में मर रही है. कोई पहली बार बारिश थोड़ी हो रही है. राजस्थान में कोई बाढ़ थोड़ी आई है. ये कोई पहली दफा बारिश हो रही है कि अगर आपके वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, 21 जुलाई से आप उनको खाना नहीं खिलाएंगे, तो यही होगा और क्या होगा? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है. उस बारिश में दलदल और कुछ लेबर काम भी नहीं कर रहे हैं. उस वजह से गायों का दलदल में फंसना. Sachin Pilot, the MP from Jaipur keeps pointing out that it's been raining in the area for 2 days and therefore the ground is very slushy, which is why the cows are dying. Not because they haven't been fed since the 21st of July, not because there's no one tending to them, but because it's been raining in Jaipur, which is why these cows are dying. I don't expect our BJP MP to say anything else. The fact of the matter is that the BJP as a political party has lost all moral grounds to do this vigilante politics and this beef politics on which they're banking on for the UP elections. The fact of the matter is that here is a party that is absolutely has no convictions in what it says. It talks about cows, it talks about temples, talks about, Ram Mandir, talks about Hindutva. But the fact is that today, because of rain, if you don't feed these cows, in fact, it is वो गौरक्षा का इलाका है. They have come here to be rescued. If they were dying on the streets by rain, I would then even accept that. But here is a shelter. Shelter means you're supposed to protect them, feed them, look after them. It's not about rain falling in the shelter. Why are they in the shelter in the first place? They have actually siphoned off budgets. They do all this money-seeking, rent-seeking in the name of cow transportation. But you can clearly see that the intent of the government is not to protect and save the cows. It is just to garner rewards when the elections come by. Sathi Jai Bharti, because this investigation comes at a time when cow vigilantes are in the news, going around roughing up people, whipping them with belts. This is where you actually need the cow protectors to be. And there they are absent, missing in action, these cows dying, and all kinds of ridiculous excuses from the MP from Jaipur. See, I do not at all approve of the kind of cow vigilantes that have been going on the roads. That's certainly for there. But I feel that, everybody has their own areas of focus. Now, when we talk about the cow protection, it has many fields. It has conservation of the indigenous breeds, it has conservation of the disease and the aged cows, as you mentioned. And obviously, whenever there is a talk of cow protection, if there is a cow slaughter is going on, there is certainly a law there to take place. So if there is some kind of violation of the law, the people who feel that they should be heading out to protect the slaughter, they could approach to the police and do it. So I do not at all approve of this vigilante thing. But the issue is that when we talk about this particular, this case of this Gaushala, I certainly feel there is some serious input, some steps to be needed. Whatever has to be rectified, it should be done. Stay with me. I want to go across now to the man whose responsibility it is to protect these cows, Otaram Devasi. He is the minister in charge of cow affairs. Remember, Rajasthan is the first state in the country, and I'm not making this up, which actually has a cow protection ministry. That's how serious they claim that they are. Otaram Devasi is the minister who heads that ministry. स्वागत है आपका देवसी साहब. हमने देखा कि हिंगोनिया गौशाला में 90 गाय पिछले 2 दिन में मरी है, 500 गाय पिछले 1 हफ्ते में मरी है. 21 जुलाई से इन गायों को खाना नहीं दिया गया. जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शरद वहां पे गए कुमार, तो हमने देखा कि एक आदमी नहीं था इन गायों की रक्षा के लिए, इन गायों को खाने पूछने के लिए कि ये ठीक है, क्या है, कैसे करना है, क्या करना है. क्या हो रहा है सर आपके राज्य में? जिस तरह से हिंगोनिया की बात है, तो हिंगोनिया में ऑलरेडी वो नगर निगम के पास है गौशाला. और जिस तरह से नगर निगम के पास है, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी उसके लिए साथ संभाल करें. परंतु जैसे राजस्थान में पहली बार गोपालन डिपार्टमेंट बना है, उसके लिए सरकार और हम सबकी ड्यूटी बनती है कि उसके लिए हम काम कर रहे हैं.
मंत्री जी, यू आर द मिनिस्टर फॉर काउ अफेयर्स। आप गाय रक्षा के मंत्री हैं। ये निगम कोई आम आदमी पार्टी की निगम थोड़ी है, कोई AIADMK की निगम थोड़ी है। आप ही के राज में आप ही की सरकार है। कोई सचिन पायलट तो चीफ मिनिस्टर है नहीं कि आप कह रहे हैं कि कोई और चला रहा है। आप ही की सरकार है, आप ही लोग उसके इंचार्ज हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना हाथ कैसे धो सकते हैं इसमें? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गायों के लिए हमेशा, जब से हमारी सरकार बनी है, हम गायों के लिए तत्पर हैं और गायों की सेवा के लिए ही निकले हुए हैं। और जिस तरह से हिंगोनिया गौशाला की बात है, आज दिन तक पूरे राजस्थान में जितने भी गौशाला संचालित है, उसमें हमारी यही रहता है कि हर गौशाला में किस तरह की व्यवस्था हो। ये गौशाला में एक खाद्य हाउस के रूप में जिस तरह से एक सेकेंड, वहां पे बदबू इतनी, एक सेकेंड सर, मैं आपको बताता हूं, जहां पे ये गाय पड़ी हुई थी, ये 500 जो मरी हुई गाय है, वहां पे बदबू इतनी ज्यादा है कि जो बाकी गाय हैं, जब वेटनरीज ने उनको देखा, उन्होंने कहा कि वो भी मर सकती हैं क्योंकि खाना आप किसी गाय को खिला नहीं रहे। वहां पे गाय पड़ी हुई है, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा, तो बाकी गाय भी वो बदबू से हो सकता है कि उनकी भी तबीयत खराब हो जाए। ये सारा आप ये ना कहिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो आपको करना चाहिए, जहां पे 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां पे आप ठीक से क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये तो राजस्थान का सबसे बड़ा काउ शेल्टर है। गाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी गाय हैं जो गौशाला में आ गई है, हर गाय के पेट में आज की तारीख में 20 से 25 किलो प्लास्टिक है, जिस कारण से ये गाय के लिए बहुत बड़ी घातक होता है। और जैसे बारिश होती है, हरा चारा मिलता है, हरे चारे के कारण ऑलरेडी उसके पेट में प्लास्टिक है। प्लास्टिक के कारण ये जैसे हरा चारा मिलता है, पॉइजन बनता है और पॉइजन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। No, sir, I'm sorry. What you're talking about general issues. Of course, what you're saying is correct, that these cows are eating a lot of plastic. But the problem in this particular instance in the Hingonia cow shelter is that there was no one tending to these cows since the 21st of July. Because all those people who are supposed to be there were upset with the senior engineers. Why they have engineers at cow shelters, I don't understand, but engineers, and they weren't working, and that's the reason why these cows were dying, that the minister and the BJP MP cannot get away with. Certainly, because we are trying to justify the condition, but it cannot be justified. The visuals have been very self-explaining in themselves, and the thing is that whether we have the plastic eating issue, whether we have the slush on the ground, or whether we have the rain, but no justification if people have not been paid their salaries for months together, and this is the state of cows. I think if whatever the authorities, they've recently learnt about this, okay, or what are they planning to do further, we would like to know. No, after we've run this story, and I'll put out that broadcast tomorrow, this cow shelter now looks very different. There are dumpers coming in, all kinds of excavation happening, all the slush being removed, the dead cows being moved away. But this should have never happened. This should have never happened in the first instance, and the fact that it happened on your watch, Otaram Devasi, is a disaster. As a minister for cow protection, you sit in Jaipur, this is happening 40 kilometers away from where you sit. ये जो हुआ ये गलत हुआ, और कहीं ना कहीं आपको और साथ ही साथ बीजेपी के जयपुर के जो सांसद महोदय हैं रामचरण बोहरा और बाकी पूरी वसुंधरा राजे सरकार को सबक लेने की जरूरत है। हाल ही में हमने देखा 50,000 युवकों को वसुंधरा राजे ने एक शपथ दिलाई काउ प्रोटेक्शन की कि हम लोग सब मिलकर काउ प्रोटेक्ट करेंगे। अरे भाई, जिन लोगों को पैसा मिलता है काउ प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको ये पद दिया गया है, वो ये काम नहीं कर रहे, आप बाकियों से उम्मीद कर रहे हैं। Totally disappointing, and it also shows the high level of hypocrisy. You've got these crazy cow vigilantes out on the road. They're doing what they shouldn't, and the people who should be protecting these cows are not doing what they must. We will track this story very, very closely. Vasundhara Raje, if you're watching this broadcast, we would like to know from the Rajasthan government what action it intends to take on the back of this India Today expose. I'm going to end tonight's broadcast here. Sadhvi Jayabharti, thank you very much for joining us. Ambika Shukla, thank you as well. Ramcharan Bohra, Otaram Devasi, Sachin Pilot for joining me on the newsroom tonight. Thank you. We're slipping into a quick break right now.